हाय गाइस। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th AHSSC एग्ज़ाम के फिज़िक्स के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द टॉप 50 क्वेश्चंस फॉर AHSSC क्लास 12th फाइनल एग्जामिनेशन। ठीक है, तो आपका एग्ज़ाम है 5th को, आज है 3rd, यानी आज का दिन आपको पूरा मिलेगा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अभी रात को मिल रहा है या फिर सुबह को मिल जाएगा। तो 3rd को अभी मिल रहा है वीडियो, तो 3rd, उसके बाद आपका 4th पूरा आपका है, 3rd पूरा है। तो 2 दिन में यू नीड टू कवर दिस टॉपिक्स, जो भी क्वेश्चंस देंगे वो, और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए एक चीज़ है कि हम लोगों ने एक बनाया है कंप्लीट 5 ईयर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व। अगर आपको वो चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हो नंबर पे, या फिर अगर आपको कैप्सूल रिवीजन नोट्स चाहिए तब भी आप इस नंबर पे टेक्स्ट कर सकते हो। ठीक है, व्हाट्सएप पे आपको ये मिल जाएगा। पेड है, बहुत ही कम प्राइस में आपको ये मिल जाएगा। अगर आपको चाहिए तो आप टेक्स्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे डायरेक्टली। ठीक है, और प्लीज़ मेक श्योर दैट आप इस चैनल को सब्सक्राइब आपने किया है और वीडियो को आपने एक बार लाइक किया है। ठीक है, और प्लीज़ मेक श्योर दैट हमारा जो ग्रुप है जो कि एग्ज़ाम के लिए बनाया गया है वो आपने ज्वाइन किया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से या फिर पिंड कमेंट से। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहला देखो, यूनिट 1 से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है आपका। जो हाई यील्डिंग टॉपिक्स है वो है कॉलम्स लो, फोर्स बिटवीन चार्जेस, देन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड टॉर्क, गॉस लो प्लस एप्लीकेशंस, फील्ड ऑफ स्पेरिकल शेल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड पैरेलल। ठीक है, along with some easy numericals. Important formulas are Coulomb's law, electric field on axis of ring, that is a derived expression, capacitance derivation and formula, that is the plate capacitor, parallel and series capacitor. Then typical questions which may come from this unit are: derive the electric field due to symmetric charge distribution, and numerical may come from field at point due to two charges, and define and explain Gauss law with examples. Short notes which are worth mentioning from this chapter are Gauss law statement and advantages, dipole in uniform field, and important derivations are Coulomb's law in vector form, and field due to a ring on axis, and potential due to dipole. Next is electric current or current electricity. High-yielding topics are Ohm's law, resistivity, conductivity, series and parallel resistors, Kirchhoff laws and network theorems, heating effect of current, potentiometer principles. The short notes may come from superconductivity and temperature variation of resistivity along with their graphs. Expected questions are: derive expressions using Kirchhoff's laws या फिर Kirchhoff rule, numerical on equivalent resistance, practical applications of potentiometer, and one more thing is Wheatstone bridge. ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, बायोट सेवर्ट लो आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म से, बायोट सेवर्ट लो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, एम्पियर्स लो फोर्स ऑन करंट इन ए मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क ऑन करंट लूप, and magnetic properties of materials. Expected questions are: derive force between two parallel currents, then application question on motor principles, that is the only one motor you have in your syllabus. Important formulas are magnetic force, that is F is equals to ILB sin theta, and Biot Savart law expression. ठीक है, next is electromagnetic induction and SE. Both are included in the single topic. The must know topics or the most important topics are Faraday's law and Land's law, self and mutual induction with their formulas and proofs, SE circuit basics, impedance in RLC circuit, power factor. Expected questions are deriving induced EMF expression, phase relation in AC circuit, and numerical on reactance and impedance. This is very important, the numerical on reactance and impedance. Next, electromagnetic waves. Important topics are production and properties of electromagnetic waves, spectrum and applications, and electromagnetic waves का जो दो तीन रिलेशंस है और कहाँ से पहला वाला रिएक्शंस रिलेशंस बना था, वो उनका जो फॉर्मूलाज है वो इम्पोर्टेंट है. Short note topics are radio waves, microwaves, X-ray and is use wave equation basics. जो equation मैंने पहले बोला है वो equations. 6 and 7 optics, ray and wave optics. High yielding topics are reflection, refraction, total internal reflection, lens formula and magnification, optical instrument, microscope, telescope. इनका simple derivation और simple formula आ सकता है. Young's double slit experiment very important.
देन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, और इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन का सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, ठीक है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, रे डायग्राम्स, लेंसेस एंड मिरर्स, डिराइव इंटरफेरेंस फ्रिंज विड्थ, न्यूमेरिकल में कम फ्रॉम लेंस कॉम्बिनेशन, ठीक है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज टू लर्न आर लेंस फॉर्मूला एंड फ्रिंज स्पेसिंग, ठीक है, फ्रिंज विड्थ जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट इज यूनिट 8, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, टॉपिक्स आर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, डी ब्रोगली वेवलेंथ एंड मैटर वेव्स। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आर Einstein's photoelectric equation and particle nature of light. Next is atoms and nuclei, unit 9. Topics are Rutherford model, energy levels, radioactivity, and nuclear reactions. Expected questions may come from explain alpha and beta decay and numerical on half-life. Unit 10, this is the last unit, electronic devices. The topics are semiconductor basics, p-n junction plus diode characteristics, transistor action, logic gates. Expected questions may come from draw and explain diode circuit and applications of transistors, along with some simple numericals from logic gates like AND, OR, NOR, XOR logic gates. Thank you for watching the video. Please make sure that you like the video and subscribe the channel, and please stay tuned for the next top 50 questions from physics video. ठीक है, thank you.